इसके अलावा एग्जाम्पल ऐसे हो सकता है कि इज द कॉन्ट्रैक्ट दैट इज कमिंग टू योर ऑर्गेनाइजेशन इज इट कमिंग एट एनी कॉस्ट। तब आपको पता है कि कई बार टेंडर का जो भी टेंडर भरा जा रहा है उसकी बोली पता कर ली जाती है some sources which are not ethical. Sometimes आपको कॉन्ट्रैक्ट मिलता है लेकिन उसके बदले में आप कुछ फेवर करते हैं उसका. So these types of ethics should be followed. These types of ethics are the ethics that majorly guide the small organizations, the businesses of small organizations. Okay, understood? Right up. और एग्जाम्पल क्या हो सकता है? और एग्जाम्पल ये हो सकता है कि सपोज करो कि तुमको डेडलाइन मिला है कोई अपने प्रोडक्ट या सर्विसेज को बनाने का, ठीक है? इस डेडलाइन के बाद आपको अपना सप्लायर को देना है, ठीक है? सप्लायर के उससे आपका अग्रीमेंट है कि इस पर्टिकुलर डेडलाइन को आप सप्लायर को देंगे. अगर आप उस डेडलाइन तक प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज मैन्युफैक्चर नहीं कर पा रहे हैं, सर्विसेज नहीं दे पा रहे हैं या प्रोडक्ट नहीं दे पा रहे हैं, क्या आप सब स्टैंडर्ड प्रोडक्ट देंगे उसके बदले? ये एथिकल चीज है. जैसे हम तुमको असाइनमेंट सबमिट करने बोले, 20 तारीख तक डेट है, ठीक है? और तुम 19 तक कुछ नहीं किया, 19 की रात को तुमको लगेगा कि अब तो डेडलाइन है, अब क्या जैसे तैसे बना के असाइनमेंट, नाम किसी तरह आ जाना चाहिए वैसे बना के दे दिए. तो ये वो लोग करेंगे जो पहले से केयरफुल नहीं है, राइट? सो बिजनेस में ऐसा होता है कि कोई डेडलाइन है और आपका डेडलाइन मीट नहीं कर रहा है. So in that case, what will you do? Will you accept it that it was you were the defaulter, or will you provide substandard products? हड़बड़ में बना के, ये कार की कंपनीज के साथ भी हुआ है कार का पूरा कंसाइनमेंट वापस करना पड़ता है क्योंकि वो सेफ्टी टेस्ट पास नहीं कर रहा है. ये सब बड़ी और छोटी सब कंपनीज के साथ होता है, लेकिन छोटी कंपनीज के साथ हम इसलिए ज्यादा इसको पढ़ते हैं, कॉस्ट जोड़िए छोटी कंपनीज के साथ. बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के पास पैसा होता है तो शॉक एब्सॉर्ब करने का पैसा होता है. अगर तुम्हारे बिजनेस का टर्नओवर 5 करोड़ है हर साल, तो तुम शायद 1.25 करोड़ का, 50 लाख का ऐसा लॉस बर्दाश्त कर सकते हो, ठीक है? यू कैन रिकवर इट. लेकिन तुम्हारा टर्नओवर ही 1 करोड़ का है तो तुम 50 लाख का लॉस बर्दाश्त कर पाओगे? इट विल बी हेवी लॉस और तब तुम शायद अनएथिकल हो जाओगे. इसीलिए हम वी आर टॉकिंग अबाउट बिजनेस एथिक्स इन रेफरेंस टू स्मॉल बिजनेस. ओके, राइट डाउन. स्मॉल टॉपिक दो, स्मॉल बिजनेस एथिक्स. राइट डाउन. Small business have many challenges. Small business have many challenges in comparison to the large business. In comparison to the large business, sometimes the question arises, whether it is normal to forego business ethics sometimes the question arises whether it is normal to forego business ethics. Forego मतलब छोड़ देना, forego business ethics because smaller businesses have to be, क्या मिस हुआ बोलो? Because business ethics, because smaller business have to be practical and pragmatic in their approach.
pragmatic, Pragmatic, pragmatic in their approach. But at the end of the day, it is not advisable to do business unethically. But at the end of the day, it is not advisable to do business unethically. Some business issues that small businesses encounter are financial capacity, legislation compliance, selling inferior products but disguising, disguise करना मतलब छिपा लेना, selling inferior products but disguising. Yeah. Some key areas for small businesses could be one, equal opportunity. Two, respectful workplace. Three, rules and regulations compliance. Four, transparency in dealing with employees and clients. Next, heading में डालो. Some ethical standards for small businesses are number one, dealing with issues early and honestly. Second, undue, undue or unavoidable pressures, undue or unreasonable pressures
on the staff should be avoided. Pressure on the staff should be avoided. Number 3, there should be thorough training for solving ethical issues. Thorough. THOROUGH. There should be thorough training for solving ethical issues to ensure that staffs are on the same page. Staffs are on the same page. Page. Done. So this was the topic about small businesses issues and ethics related to small business. So I've always told you that small businesses come with their own share of constraints, which are not the case in case of large businesses. That is why we study this differently in case of small business. Now the next topic is code of conduct. We are studying business ethics, right? Code of conduct. Code of conduct का मतलब इसको हम लोग sometimes we also call code of conduct as code of ethics. See, every organization comes with and should mandatorily come with its code of ethics. Now, what does this code of ethics do is it provides a broader framework of how the ethics management should be at the workplace. For example, there are some organizations where you will see that women often complain of not getting equal opportunity for promotion. Why? Because there is a gender bias. People of certain caste will always complain that discrimination होता है ऑर्गेनाइजेशन में. एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के लोग हैं और वो ही रन कर रहे हैं. ओके, अभी के टाइम पे एथिक्स हैज कम इन वोग. ये कहने का मतलब कि जो ऑर्गेनाइजेशन एथिक्स के साथ काम करती हैं उन ऑर्गेनाइजेशंस को बहुत अच्छा माना जाता है. इन सब में सबसे अच्छा कोड ऑफ एथिक्स या तो आप रिटन रख सकते हैं या आप कोड ऑफ एथिक्स जो बनाते हैं उसको ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो भी बनाते हैं वो सब फॉलो करेंगे. सो दैट शुड बी मेड इन अ वेरी क्लियर, in a very understandable manner, simple in language that can be read and understood by all its employees. For example, Uber का code of conduct या code of ethics बहुत लंबा है लेकिन simple है. Google का code of conduct या code of ethics is considered to be one of the most modern organizations in terms of code of ethics. Like Google has clearly said, आपको याद है Me Too campaign चला था? Yes. What was that campaign? Anyone remembers it properly? Yes. What? Very good. Very good. Me Too campaign. Remember that? Me Too campaign was a campaign, especially in light with Me Too campaign. This was a campaign where women who were facing harassment in some kinds, physical, mental, verbal, anything, would come up and share their experience to the world that you're not just alone. I'm there with you, in the sense that not just one or two women face this problem, rather it is a rampant behavior at workplace to feel harassment. There were a lot of Bollywood actresses who came up. There were many
women from media, there were not many women from different organizations who came up and spoke about it, right? In light of that, okay, गूगल का कोड ऑफ कंडक्ट या कोड ऑफ एथिक्स को वन ऑफ द मोस्ट मॉडर्न माना जाता है, क्योंकि गूगल ने कोड ऑफ कंडक्ट में कुछ ऐसी बातें इंक्लूड की हैं जो नॉर्मली हर ऑर्गेनाइजेशन में नहीं होता है. फॉर एग्जांपल, Google has said that we are the organizations who would condemn any kind of bullying, any kind of harassment against not just women, anyone in the organization. और इस anyone में third gender भी आता है, not just male, not just female, the third gender also comes in this category. And if you have faced any kind of harassment, we encourage you to come up and speak about it. And we will see to it. We'll take note of it. So this third gender thing has not been added by a lot many companies, because this is also one category of person who has to get social acceptance. They feel they are, as much emotional as we are, and any kind of discrimination would put Google in a bad light. So any kind of discrimination in sense of marital status, there are many organizations who do discrimination on the basis of marital status. And इसमें बहुत अच्छी IT companies भी आती हैं. If a woman is married, they will probably be reluctant to give her an on-site opportunity. This happens, no matter how talented she is. I'm not speaking about every organization, but there are substantial number of organizations who do this because there is a prejudice. They'll give it to a married man, that is fine, but to a married woman, they'll not. Why? Because they consider it that she will shy away from her responsibilities. She'll not be probably able to take care of her responsibilities at workplace. She'll have a double mind, home, college, home, office. Okay. Third case, they do not differentiate. Google, talking just about Google, it does not differentiate on the basis of pregnancy. That is yet another thing added in Google, which not many organizations have. It's a natural phenomenon. It's a long process. Women are not fit to work during that time, but that should not deter her from being career oriented if she wants to come back to something. There are many IT organizations who are reluctant to give a new mother job rather than someone who is just a fresh or hiring someone else. Why? Because they already have this in their mind that she will be taking care of both the things, and that's why she'll be directed more towards her child and not towards her work. ये prejudice है, तो ये discrimination हुआ और ये आपके ethics के खिलाफ है, right? कुछ jobs ऐसे हैं जिसमें कि जो कि पहले से, जैसे तुम लोगों के पास भी जेडी आएगा ना, तो उसमें ये लिखा हुआ होगा कि मेल कैंडिडेट्स प्रेफर्ड, ठीक है? तुम उसको डिस्क्रिमिनेशन नहीं मानोगे. देखो, उसको डिस्क्रिमिनेशन मत मानो, क्योंकि कुछ जॉब्स में ये भी लिखा रहेगा, जैसे फ्रंट डेस्क का जो भी जॉब होगा ना, उसमें लिखा रहेगा फीमेल कैंडिडेट्स प्रेफर्ड, राइट? आप जनरली जहां जहां के रिसेप्शन पे जाइएगा वहां पे आपको फीमेल कैंडिडेट मिलेगी. और ये जो इस तरीके का जॉब है जिसमें मेल कैंडिडेट्स प्रेफर्ड होते हैं, इसमें होता ये है कि आज तुमको एक डिस्ट्रिक्ट में है, कल तुमको हो सकता है कि बाइक उठा के दूसरे डिस्ट्रिक्ट में जाना पड़े, डीलरशिप टॉप कर, ये रफ वर्क होता है, ठीक है? एंड समहाउ फीमेल्स को सूट नहीं करता है टॉकिंग विद डीलर, नेगोशिएटिंग विद सप्लायर्स एंड ऑल, ओके? तो वो एक अलग बात है. लेकिन फॉर द सेम लेवल ऑफ जॉब, फॉर द सेम काइंड ऑफ career, for the same kind of profile,
If an organization discriminates, then that becomes a problem. जेंडर आइडेंटिटी, इसके ऊपर भी गूगल कहता है कि हम डिस्क्रिमिनेट नहीं करते, आप किसी भी जेंडर के हो, ठीक है, किसी भी का मतलब जनरली फीमेल और थर्ड जेंडर के बारे में. रिलीजन, you know that Google is an international company, right? Google में हर country, हर continent के लोग काम करते हैं. So they have clearly set it out in their code of ethics that we do not discriminate on the basis of color, ethnicity, because there are countries that still have that black and white problem. America में है ये apartheid का problem आज भी. So Google says it very clearly that we do not differentiate on the basis of gender identity, pregnancy, third gender, color, ethnicity, veteran status. Okay, so these things. Uber has set out its 4 values, which is very 4 values code of ethics में, और उस 4 वैल्यूज के साथ उसके एम्प्लॉइज को स्टिक करना है. गूगल के साथ भी खराब कल्चर, वर्क प्लेस का खराब कल्चर का बहुत इश्यूज आया था, उसके बाद उसने कोड ऑफ एथिक्स सेट किया. टेस्ला, ठीक है, टेस्ला के एथिक्स को आप समझ सकते हैं एक रिफ्लेक्शन से. जब उसके सीईओ टिम कुक थे, he came on record and said that we in Tesla do the right thing even when it is difficult. That is ethics, right? That is ethics. जब तुमको तुम्हारे ऊपर कोई प्रेशर नहीं है तो सही करना क्या मुश्किल का काम है? कोई मुश्किल का काम नहीं, राइट? तुम्हारा टेस्ट तो एथिक्स का तब होता है जब तुम्हारा कंडीशंस फेवरेबल नहीं है और तब तुम सही काम में स्टिक करते हो. That is known as ethics, ना? So the CEO of Tesla, he came on record and he said that we in Tesla do the right thing even when it is difficult to do. Okay, so lump sum ये समझो कि code of ethics या code of conduct is a guideline, a framework which is provided to people of the organization. This speaks, the code of ethics or the code of conduct speaks so much about an organization's philosophy, what organization believes in, how organization wants to proceed with its employees. Okay, this also sets out a broad framework for people, employees who are working. Okay, कुछ organizations हैं जो कि ये clearly laid out करती हैं कि employees को, see, the CEO will not come to the person who's working at the junior most level to tell him how ethics works. लेकिन एक broad guideline बनाई रहती है और उस guideline के according mention क्या रहता है कि whatever you are doing, it should be legally right. कानूनन तरीके से वो सही होना चाहिए, और अगर आपको ये लगता है कि आपका काम कानूनी तरीके से सही नहीं है तो प्लीज कम टू मी, मतलब मेरे पास आइए और फिर हम आपको सजेशन देंगे उसके बारे में. ओके, so the rest will write in next class about
Roll number 1. Roll number 1. क्या हो गया? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23,